नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ज्वाइन कीजिए आज के इस हमारे लाइव सेशन में। थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण कल लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के बीच में मैं लाइव आया करूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्टार्ट। लाइव हो चुका है। जल्दी जल्दी जो भी भाई हमारे जगे हुए हैं, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए इस लाइव सेशन में। और बात करते हैं आज कुछ नया चीज़, नए टॉपिक को लेके, है ना। आज का टॉपिक तो हमारे पास बहुत अच्छा वाला है ना। तो आप लोग जुड़िए लाइव में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ 2 मिनट में किताब लेके, बाकी सब कुछ रेडी है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम का जो है ना, मार्जिन होते रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए सॉरी। चलिए जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन में। आप लोगों के बीच में मैं लॉन्ग टर्म का वीडियो एक लाऊंगा, है ना, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वो। तो आशा करते हैं, तो जैसे जैसे आप लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़िएगा भाई, तो यदि आप नए मेंबर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बाकी हमारे जो भी पुराने वाले भाई हैं, तो सारी वीडियो को आप लोग जाके देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका भाई नया नया कंटेंट ये सब लेके आते रहता है। तो आप लोग बस जुड़ने का काम कीजिए भाई से ज़्यादा। कल से मेरा टाइमिंग हो जाएगा मॉर्निंग। कल से मैं मॉर्निंग में हो सके तो लाइव आऊँगा, क्योंकि मैं शिफ्ट अब नाइट हो गया, है ना। तो मैं चेंज करूँगा टाइम को। ओके।
नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। आज का टॉपिक होने वाला है बियर। बियर के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बस लाइव में अपना रेटिंग देता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ अपने नॉलेज गेन के लिए, है ना। तो बाकी आप लोग जितने भी भाई हमारे जुड़ते हैं लाइव में, आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी दिखाइए वीडियो में, है ना। ये सब जब होते रहेगा कंटिन्यूसली, तो वन डे सब कुछ इजली हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज से। तो मेरा लास्ट टॉपिक था एल्कोहलिक बेवरेज। एल्कोहलिक बेवरेज फुल्ली कंप्लीट हो चुका था। तो टॉपिक आज देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्योंकि आज मैं पेज नंबर को चेंज करूँगा, है ना। वाइट है, ठीक है। चलिए वाइन के बारे में ही जान लेते हैं, आखिरकार वाइन क्या होता है ना। क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और हमारे भाई लोग भी लाइव में जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी भी भाई का, है ना। ये आप लोग का टाइम मैं जानता हूँ कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए तो चलिए भाई, वाइन के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं, किस किस चीज़ के बारे में आप नॉलेज जान रहिएगा, ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर we are able to define the define and classify wines. Now the continuous of grapes. Okay, name and understand the practicity of some of the famous black and white grapes. List of factor, list of factor influencing the character of wine. Understand the wine fault and the reason for them. Now, how to evaluate wine? Understand how wine are named. ओके, तो ये सब चीज़ जो है आपको कहीं और नहीं हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट तो हो चुका है। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन of all the alcoholic beverages, wine is regarded the most complex and interesting subject of study. This is so because each country and the region uses different type of grapes for wine production. Implements on labeling, law, law, law follow its own quality control, has different manufacturing processes. Manufacturing process, wine evolution method, storage method follow several service procedures for various type of wine. etc. A comprehensive book on wine that deal with all the these
all of this except its justifiable. Here we will discuss what is expected from the food and the beverage service staff. Definition of wine. Wine is a alcoholic beverage obtained from the fermented juice. Wine is a alcoholic beverage obtained from the fermented juice from juice of freshly harvested grapes. It is the prepared from both white grapes and the black grapes. There are many varieties of grapes produced and not all of them are used in the production of wine. The color, flavor and aroma of the wine are largely influenced by the type of grapes used in the production. Classification of wine. Wine is classified on the basis of color, taste and content. Okay, we are classifying the wines depends on their color, taste and content, because without without wine classification we cannot judge anything how to work hard. Okay, तो हम लोग देखेंगे इसमें वाइट वाइन है आपका, वाइट वाइन, रेड वाइन, रोजी वाइन, प्लस वाइन। ओके, पहले आपका है कलर पे। ओके, कलर में डिफाइन किए तो व्हाइट वाइन, रेड वाइन और रोजी वाइन, और लास्ट वन इज प्लस वाइन। तो when we are classifying depends on the color. One four type one other four types like red one, white one, rosy one and plus one. Then depends on the taste. Dry one, sweet one, medium, and third one is आपका content depends. Still wine, sparkling wine, fortified wine, aromated wine, tonic wine. That's it. तो ये है आपका टाइप वाइन का। बेसिकली वी लर्न द बेसिक थिंग्स ऑफ द फूड एंड बेवरेज नॉलेज। ओके, तो ये सारी चीज़ को हम इजीली वे में जानना चाहिए, है ना। तो ये सब जो होता है आपको किसी के जब अटैचमेंट में आइएगा, किसी के सेक्शन में जाइएगा, सेशन में जाइएगा, ये सारी चीज़ आपको आउट ऑफ बुक मिलने वाला नॉलेज है ना। तो ज़्यादा जब आप डेली ज्वाइन करते हैं, किसी भी भाई को सपोर्ट करते हो, लाइफ से में स्टार्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको नीड एवरीथिंग। ओके, नीड एवरीथिंग लाइक service types of wine, beer origins, etc. Some cocktails name, mocktails name, etc. For the basic knowledge, because you need the knowledge for the if you want to join another property, knowledge is most important. So we learn every day something new topics, new knowledge add in your mind, because जब आप किसी नई प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो आपका इजीली वे में जॉब हो जाए होटल में, है ना। बाकी आप जानते हैं कि दिन ब दिन होटल इंडस्ट्री में भी कंपटीशन बढ़ गया है। इसमें आपको कम्युनिकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द मोस्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक वो चीज़ आपको इसी वे में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यही सब जो टॉपिक है हम लोग
हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के बीच में मैं लाइव सेशन के बीच में आते रहूं और ये सारी चीज को मैं एक्सप्लेन करते रहूं वन बाय वन, है ना। तो ये सब जो चीज है जानना जरूरी होता है, आपके बेसिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और वर्क में भी इम्पोर्टेंट है। तो सो इट्स ओके। कोशिश करेंगे ये लाइव सेशन आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा आज लॉन्ग करूँ, है ना। 11 सॉरी 11:30 11:40 तक मैं करने का प्रयास करूँगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, आप लोग जुड़िए लाइव में, है ना, क्योंकि टाइम भी हो गया है और मैं 40 मिनट्स और रहूँगा आप लोग के बीच में। मैं लाइव आप लोग जानते हैं कि मैं लाइव 1 आवर्स लाइव में नहीं रहता हूँ। तो कोशिश कीजिए, आइए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन में जुड़िए, कनेक्टिविटी अपना दिखाइए अपने भाई के प्रति और बात कीजिए, और कुछ ज़्यादा नहीं है बोले। ओके। तो white wine, the color of white wine ranges from the pale straw with the green tints to dark gold. It is produced from the both white and black grapes. If produced from the black grapes, the skin of the grapes must be removed soon after crushing to prevent the moist grapes taking on the color from the pigments present in the skin. Pigments, not pigments. So, red wine. The color of red wine ranges from the purple with the young to brick red added red as it is produced from the red grapes. The skin is allowed to remain with the fermenting must either throughout throughout the process of halfway through the through the color, coloring pigments present in the skin give color to the wine. Rosy wine. This wine is light pink. This wine is light pink in color, which is produced from the mixture of white and the red grapes, or only from the red grapes. The skin of the black grapes is allowed to remain in contact with the most still the required things is obtained. It takes about 24 to 36 hours, depending on the intricacy of rose color required. Once the required color is obtained, the skin is removed. It is the legally permitted in some countries to blend a small quantity of red wine and white wine. Plus wine, it is a new style of rosy wine developed in the California. California skins of black grapes are allowed to Nikes the must for a very short period.
Which product is a very light pink color? Mine's test. According to the test, wine is classified into dry, medium, and sweet. Okay. According to test, dry, medium, and sweet. Dry, medium, and sweets. Dry. It is produced when all the sugar is converted to alcohol. Dry wines, sweet wines. It is often when there is some sugar left after fermentation. Stop stop naturally or intellectually by the manufacturer. Medium, it is neither too dry nor too sweet. It has trace of sugar left after the fermentation. Content, based on the content of the wine is classified as still, sparkling, fortified, aromatic, and tonic wine. Still wine, it is a kind of wine obtained by the natural fermentation process without adding anything else. The carbon dioxide produced during fermentation is allowed to catch back. This is a type of wine. It is also termed as a table wine. The alcoholic content is 10 to 14. About the carbonous Suvagens is one of the most popular table wines. Sparkling wine. These are the wines bottled with the CO2 produced during the fermentation. The gas is prevented from the spacking. Spacking the trap gas is a result of secondary fermentation either in the bottle or in the scale. Then some manufacture integrate with wine with the gas. It gives efficiency of sparkle to the wine. The alcoholic percentage is between 10 and 13. The glasses used for sparkling wine must be thick or thick to withstand the pressure of a gas behind the cork. Sampling is an example of this kind of wine. 45 wine, the alcoholic extent of the wine is increased with the addition of brandy at the beginning or at the end of the fermentation. The alcoholic strength of the 45 wines range from the 16 to 22. Above this type of the wine is also termed the heavy wines. Examples are sherry, port, Madeira, and Marsala. Aromatized wine. These wines are the 45 and the aromatized with the herbs, barks, spice, root, etc. The alcoholic content is the 14 to 20. Above vermouth is the most popular aromatized wine. ओके, तो जो वर्माउथ वाइन जो होते हैं वो आपका काफ़ी फेमस है, लाइक एरोमेटाइज वाइन का ये जो पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डे बाय डे एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपका पास सेकेंड वन है द टॉनिक वाइन। दिस वाइन हैज हेल्प इम्प्रूव एडिंग टू इट टॉनिक वाइन। सो health improvers, okay, added to it.
ग्रेप्स, अब हम ग्रेप्स जब यूज करते हैं वाइन में, तो वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स का यूज कर रहे हैं, तो ग्रेप्स का पार्ट करना पड़ेगा हम लोग को, कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं ग्रेप्स का, है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ग्रेप्स, sugar and yeast are essential of yeah, sugar and yeast are essential from fermentation to occur, and the acids, pigments and the tannins are necessary for wine to have a good backwards taste, color, body and the balance. All these elements are available naturally in each grapes. In varying promotion according to the grape's variety, the type of swell in which the wine grow and the climates. Contain constituents constituents of grapes. The constituents of grapes to contribute the winemaking are described here. Basically, we are part in the grape four types: stalk, stalk, skin, pulp, and pips. Stalk, skin, pulp, and pips. That's it. So, stalks hold stalks hold grapes uh, in bunch. They right around 3 to 7 of the total weight of the harvest depending on the types of wine. Stalks contain tannins, which is soluble in the alcohol tannin. Contributes of the following the quality to the wine. Strategy: maintain the quality, help in the calculation with the fanning agent containing protein that is used during the clarification process. Skin: it is a natural offer to protect the content inside the grape. The skin contains the pigments and traces of the flavors that give the color of the wine. The skin is covered with waxy substance called yolk, which contains bacteria, molds, and millions of wild and the wine years. Yes, including Saccharomyces elephantiasis in various forms, which convert the grape sugar to alcohol. Pulp: it is a soft substance behind the skin of the grapes, which is contain liquid sugar. Pulp. Okay. Salt, skin, pulp, and acids such as salicylic, malic, and citric acids are amount to 80 to 85% of the weight of the bunch during the fermentation process. These acids increase
with alcohol and produce extra which is the produce backwards of wine. Other than that, these axis the bulbs are also other minerals which influence the taste and the character of wine. The water content of the pulp is about 80% and the sugar is between the 10 to 25 and the rest is acid. The, the composition depends on the variety of the grapes and the climate's condition. Grapes. These are the small seeds of grapes. These contain both tannins and oils. They give an unpleasantly bitter flavor to the wine and are the tips during the wine making. Okay, wine making, not making, making. Okay, making charts जो होता है मेकिंग वो बोलते हैं मेकिंग. ओके, तो ऐसे क्लासीफाई करना आप लोग सीखिए हमारे जैसा. ठीक है, तो हमारे जैसा आप सीखिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा इन योर लाइफ. सो सीखना पड़ता है ना. जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक कैसे होगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में आपको या हमको सभी को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है. स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहेगा. होटल चेंज कीजिए, ऐसा नहीं है. तो ये सब जो है it are the opportunity to work in the hospitality industry because so sometimes my sound is not properly gone in your live sessions because my colleagues are using the another phones like listen the music movies etc. so इसी वजह से then copyrights are not coming on this lesson because all videos and my sounds so everything which is genuine. So it's a big not a big problem, but we cannot want another sounds come the live sessions है ना. तो आप लोग के बीच में वीडियो लाते रहता हूँ भाई. तो आप लोग you try I need your appreciations for the promote me because without your promote I cannot do anything any changes. Okay, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए दीजिए है ना अपने भाई को. आई विल अभी तक दो ही बंदे भाई लाइव में आए. अभी तक मैं 14 मिनट्स अपना इस लाइव का 14 मिनट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोग जानते होंगे है ना. कितना इम्पोर्टेंट टाइम मैं देता हूँ तो आप लोग नहीं जान पाइएगा. खैर कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव सेशन में जुड़िए. ये सब जो टॉपिक्स है ये सब चीज़ हम लोग बात करेंगे है ना. तो प्रयास रहेगा. Now give me moment because I will make it a black tea for me because ये सोने का मूड हो रहा है मेरे को. बट अभी मेरे को सोना नहीं है ना भाई. क्योंकि आप लोग को से बात जो करना है ना बात जो करना है उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ब्लैक टी चाहिए. और ब्लैक टी
टिंड है हेल्थ के लिए भी। आप 2-3 मिनट जो भी भाई और बिजी होगा
जुदा ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में सब कोई है ना। तो अभी है main grapes of variety. There are hundreds of variety of grapes grown, but not all of the produce good quality wines. The main grapes used in the production of wine, their characteristic are as follow. White grapes, principle of white grapes. White grapes is given to table number 1, otherwise table number 2, insect acid they have quinoa, साइटोनी राजी सेमोलियन सिलुबुला आपका कौन सा वाइट वाइन का हो गया है वाइन्स का लेकिन सिंस क्विनोआ मुस्काट रेजिन्स सेवेनिन रोके अग्निमिला वेल डेल्हो ये सब जो है आपका वाइन्स का फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर ऑफ वाइन ये आपका होगा। इसके बाद मुझे लगता है इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। इसका स्टेप्स ऑफ वाइन टेस्टिंग भी है इसमें आपका दिया हुआ और है भाई वही है इसमें है। इसके बाद वाइन फैक्ट्री में जाएंगे हम लोग तो भी समय इसमें है कंप्लीट करने में और ये आज कंप्लीट होगा लास्ट टॉपिक आज का रहेगा ये। यदि आप लोग भी ब्लैक टी पीते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं ब्लैक टी पीने से क्या क्या फायदा हो सकता है। चलिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे, चाय पीने में समय लगता है। चाय खत्म होगा लाइव सेशन भी खत्म हो जाएगा मे बी। Influencing character of wine, the characteristic of a type of grape vary from the vineyard to vineyard and country to country depending on the nature of soil and the climates in which it grow. The sugar content is and acids level of grapes greatly influence the character of wine. The character of wine largely depends on the following factors: soil, grape variety, climates, latitude, accepts, viticultures, etc. ये सब चीज़ को हम लोग जानेंगे। ओके, विटिकल्चर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे की ओर देखेंगे। Characteristic of type of grape vary from the vineyard to vineyard and country to country depending on the nature of soil and the climate in which it grow. The sugar content is and the acid level of grapes greatly influence the character of wines. The character of wine naturally depends on the following factors. First one है आपका soil,
the mineral content of the soil and the groundwater and the groundwater determines the composition of acids and other gas mineral which influence the aroma of wine. Grape variety. Each grape variety has a distinct aroma and the other features which play an important role in determining in the kind of wine. The produce the characteristic of wine produced from the well-known grape are given in table number 2.8. Climate. The climate can be placing of the grapes. It comes the sunshine, hail, storm, wind forest, land, etc. can damage the grapes. The average yearly temperature of the place should not be below 10 degrees Celsius. The ideal average temperature is 14 degrees Celsius. Latitude. The most wine produced in one country line between the 13 to 15 latitude. The countries near the 13th latitude have higher temperature, which accelerate the fermentation process, producing poor quality wine. The countries near the 15th latitude produce better wines. Except vineyards on the slopes of valley that normally perform as the front of the stream down to the slope facing south normally produce good quality wine due to the longer exposure sunshine compared to the north facing slopes, as they do not have the same advantage. Viticulture. विटिकल्चर जानेंगे विटिकल्चर की इम्पोर्टेंस है ना।
viticulture. This this is the most important and in various stage of viticulture, producing, pruning, weeding, uh, spraying, harvesting, etc. happen at a particular month of the year, considering the weather. Any daily in the schedule with the influence the character of the wine. For example, late harvested grapes have more sugar content, which determines the character of the wine. Uh, Vinification. It refers to the method methods of making wine product have lot lot of options before them at each stage of making wine options or method of the dressing, fermentation, containers, temperature control, type of foods for aging the duration and aging the blending etc. are the some of them. The decision taking the influence the character of wine. The wine produces new world with this latest technology while the traditional winemaking countries follow the method of making wine which has on the characteristic that can allow for fermentation, temperature maintained within the fermentation type of age in the maturations, maturation containers, stainless steel or the oil finishing agent used in the aging dates etc. determine the character of the wine. Agings, agings determines of the character of the wine. The longer wine internatures and the milk power and the smoker will be on the technique of the flavor. In vanilla from the wood, storing wine should be stored in the appropriate temperature and it is the room free from the direct sunlight and the vibration. Uh, Vibration wine should not be subjected to extreme fluctuation of temperature. One stage would mark of the character of wine. Transportation. Transportation. Bottles should be transported and handled carefully during the transit. Characteristic, characteristics, characteristics of wine. Good quality wine will have the flowing electricity. It should be aroma of the grapes which in the making and should be free from the unpleasant smell. It should be well balanced that it is all components of wine should be harmony, fluorescence, tannin and flavors. It should be clear and bright. Fault in wine. ओके फॉल्ट इन वाइन ये सब बहुत जरूरी है. Import are imports
are taken by everyone who handle one in the teacher, it aroma profile and taste. But unfortunately, some of the wines acquire faculty electricity due to many regions. A good wine maker will identify them in the wine itself and take connectivity measures. Some of the common faults and the regions of them are described in the section. Excess sulfur. During the fermentation process, sulfur dioxide is added to check the absence of wellness, which also attend a respective addition to the much of SOD lips and implicit gas by which is people of the smell of the body and matchstick on the wine. However, it is normally especially exposed to air either by decanting of the swelling in the glass. Oxidation during the aging process, air inverts the wine through the wine filling process would and the alcohol reacted with the oxygen when the exposed to oxygen for a long period of time. White wine, especially actual the brownish color wine with wine both white and red acquire the aroma of the sherry. They may also the leaflets with the whole and the cold smell, crop and cork. Wine bottle are closed with cork to determine the intensity and location of the quality and the quantity of the content, while the storing wines bottles are stored horizontally to prevent the cork from the wetting the should have resulted into a cause and the content with the wine service as not to allow the air to wind the cork with the containing with the strong molecule smell by the transport TCA side during the centralization process spoils wine during the contact. The wine take on the smell of the faculty for it should be the return of the sulfur. However, it is not the quenching the wine. This is of God that may have been fallen with the bottling the water. This can be during the decanting process. Next one is vinegar. Wine turns vinegar when it is exposed to oxygen for long duration and also the activity of the actinobacteria is enhanced, which act on alcohol and converted wine to vinegar or iodine sulfide. This has the smell similar to a rotten edge. The wine take on the smell of rotten edge when the is react with sodium during the fermentation. However, this phase fades away when the wine is extracted. This occurs mainly in red wine. Okay. Formation of crystals. Sometimes there may be formation of the bodies, materials, and the crystals. Wine tasting.